The function of fungi in an ecosystem is to return nutrients to the environment. करेक्ट ऑप्शन है दैट इज पी. बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट है दैट इज प्रोवाइड ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूसर्स, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स, decrease competition among consumers. As you know, many types of bacteria and fungi are the principal decomposers of the biosphere. Decomposer or reducers break down the complex organic compounds of dead matter of plants and animals into simple compounds. They secrete digestive enzymes into dead and decaying plant and animal remains to digest the organic material. After digestion, decomposers absorb the products for their own use. The remaining substances are added to the environment. That's why the function of fungi in an ecosystem is to return nutrients to the environment, as many fungi are the principal decomposers. Means B is the correct answer. Next question. In the given food chain, the trophic level that contains the largest biomass would be at. एक फूड चेन गिवन है ग्रास, ग्रास होपर, रेड आउल. हमें आइडेंटिफाई करना है गिवन ऑर्गेनिजम्स में किसका बायोमास सबसे ज़्यादा होगा, लार्जेस्ट होगा. तो करेक्ट आंसर इज सी. ग्रास का बायोमास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होगा. रेड आउल और ग्रास होपर इनकरेक्ट है. सी ग्रास इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Barnacles are a type of sea animals that attach to whales. Barnacles cannot move on their own, therefore, they use the whale to move around and find locations with food. The type of animal association that best fits in the given situation is D. Commensalism is the correct answer. As you know, it is a type of symbiosis in which one partner is benefited while the other is neither benefited nor harmed. बेनिकल्स को फ़ायदा हो रहा है मूव अराउंड करने में और लोकेशंस फाइंड करने के लिए, बट वेल्स को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ना ही कोई नुकसान हो रहा है. तो इस तरह के सिम्बियोसिस रिलेशनशिप को हम कहते हैं कमेंसलिज्म. मीन्स डी कमेंसलिज्म इज द करेक्ट आंसर. द pyramid of number that correctly represents the given food chain is food chain, tree, birds, mosquito. Pyramid of number is the graphic representation of the number of individuals per unit area at various trophic levels. Suppose एक ट्री है, उस पे जो सीड्स या लीव है उनको 10 बर्ड्स ईट कर रहे हैं और उन 10 बर्ड्स को सपोज 100 मॉस्किटोज बाइट करें. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है pyramid of number को. That's why B is the correct answer. Next question. Which of the following events of nitrogen cycle decreases soil fertility by depleting nitrogen from it? नाइट्रेट्स जब सॉइल में होते हैं तो सॉइल की फर्टैलिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं. जब नाइट्रेट्स नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होते हैं तो सॉइल की फर्टैलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है. जब नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट होती है नाइट्रेट्स में तो सॉइल की फर्टैलिटी इंक्रीज होती है. ऑप्शन डी रिप्रेजेंट कर रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन को. ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को. ऑप्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है अमोनिफिकेशन को. इन तीनों केसेस में सॉइल की फर्टैलिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेप्ट ऑप्शन ए जो डीनाइट्रिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा करेक्ट आंसर है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टैलिटी डिक्रीज हो रही है. मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर. और अगर आप गौर करो तो सारे एरोस नीचे की तरफ आ रहे हैं एक्सेप्ट ऑप्शन ए का ही ऊपर की तरफ जा रहा है. मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A species is a group of organisms which interbreed freely in nature. A is correct. As you know, a species is a group of organisms which can interbreed freely in nature to produce fertile offspring. Option B, C or D incorrect. That is, lives without abiotic factors, consists of unicellular organisms only,
contains different number of chromosomes are incorrect. Only option A is correct, that is, a species is a group of organisms which interbreed freely in nature. The function of fungi in an ecosystem is to, you know that many types of bacteria and fungi are the principal decomposers of biosphere. That's why option B is correct, that is, the function of fungi in an ecosystem is to return nutrients to the environment is the correct answer. Option B is correct. Option A, C or D incorrect, that is, provide oxygen gas to producers incorrect. Increase complexity of food chains be incorrect. Decrease competition among consumers be incorrect. As you know, decomposers or reducers break down the complex organic compounds of dead matter of plants and animals into simple compounds. They secrete digestive enzymes into dead and decaying plant and animal remains to digest the organic material. After digestion, decomposers absorb the products for their own use. The remaining substances are added to environment. Many types of bacteria and fungi are the principal decomposers of biosphere. That's why option B is correct. The function of fungi in an ecosystem is to return nutrients to the environment. Next question. The flow of material in an ecosystem is different from the flow of energy because it is cyclical through decomposers. Option B is correct. Option A, C, D incorrect, and that is remains unaffected by sunlight, is not returnable to the environment, moves from producers to consumers. As you know, the flow of energy in different trophic levels of ecosystem is unidirectional. That's why the flow of material is cyclical through decomposer. That's why the flow of material is different from flow of energy. So the option B is correct. Next question. Following are the steps of nitrogen cycle. Number 1. Conversion of ammonia into nitrates. Number 2. Formation of proteins. Number 3. Conversion of N2 gas into NH3 gas. N2 is nitrogen, NH3 is ammonia. Number 4. Conversion of nitrates into N2 gas, that is nitrogen. Which of the following is the correct sequence of events of nitrogen cycle? सबसे पहले कौन सा स्टेप आएगा? Number 3, that is conversion of nitrogen gas into ammonia gas, then conversion of ammonia into nitrates, then formation of proteins, then conversion of nitrate into N2 gas. तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? 3 1 2 4 3 1 2 4. तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए. That's why A is the correct answer, which shows correct sequence of events of nitrogen cycle. Next question. Which of the following animals fall in the category of both secondary and tertiary consumers in the given food web? हमें एक food web given है. Grass is producer. जो प्रोड्यूसर को ईट करते हैं वो कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर. मीन्स कैटरपिलर और ग्रासहोपर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है. क्यों? वो प्रोड्यूसर्स को ईट कर रहे हैं. और हर्बीवोर्स है. जो प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करते हैं वो कार्निवोर कहलाते हैं या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर. मीन्स स्पाइडर और फ्रॉग क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर. अगर मैं इस फूड चेन से जाऊँ तो फ्रॉग इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर. इस फूड चेन से जाऊँ तो भी फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर है. और अगर मैं इस फूड चेन से जाऊँ तो स्पाइडर सेकेंडरी कंज्यूमर है. जो सेकेंडरी कंज्यूमर को ईट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? टर्शरी कंज्यूमर. तो इस फूड चेन से अगर मैं जाऊँ, चूँकि फ्रॉग स्पाइडर को ईट कर रहा है तो वो क्या है? टर्शरी कंज्यूमर. मीन्स फ्रॉग दोनों है, सेकेंडरी और टर्शरी. इस फूड चेन से सेकेंडरी, इस फूड चेन से भी सेकेंडरी, बट इस फूड चेन से क्या है? टर्शरी कंज्यूमर. सो ऑप्शन ए, फ्रॉग इज द करेक्ट आंसर. फ्रॉग इज बोथ सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर. और हमसे यही पूछा था कौन दोनों है, सेकेंडरी और टर्शरी. दैट्स व्हाई ए, फ्रॉग इज द करेक्ट आंसर. Next question. Students of 10th grade in a particular school are following the 3R principle of environmental care. Which of the following is an example of reduce? Given options: storing spices in empty bottles of jam, composting kitchen waste in the garden, avoiding giving presents with excessive packaging,
रिपेयरिंग ब्रोकन आइटम्स रादर देन बाइंग न्यू वंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, दैट इज अवॉइडिंग गिविंग प्रेजेंट्स with excessive packaging is the correct example of reduce. That's why option C is correct. In the given food web, the missing living organism X can be A/N. हमें एक फूड वेब गिवन है जिसमें हमें एक्स को आइडेंटिफाई करना है। प्रोड्यूसर को जो ईट करते हैं वो कौन होते हैं? हर्बीवोर को जो ईट करते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं। हमें इन गिवन ऑप्शन कैट, काउ, ज़ेब्रा और एलिफेंट में से पहचानना है कार्निवोर, तो वो एक ही ऑप्शन है, दैट इज ए, कैट। जो कार्निवोर है, काउ, ज़ेब्रा और एलिफेंट क्या हर्बीवोर है, प्लांट को ईट करते हैं, एनिमल्स को नहीं। कैट इज ओनली कार्निवोर, दैट्स व्हाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्स इज कैट, जो रैबिट को ईट कर रही है। मीन्स ए, कैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the given food chain, the pyramid of numbers will be shown as, pyramid of number हमें पहचानना है और एक फूड चेन गिवन है। ट्री, ग्रासहॉपर, माइस, बर्ड। सपोज चंद ट्री है या सिर्फ एक ट्री है जिसपे बहुत सारे ग्रासहॉपर होंगे, उन बहुत सारे ग्रासहॉपर को कुछ माइस ईट करेंगे, उन कुछ माइस को बहुत ही कम बर्ड्स ईट करेंगे। तो जो बेस्ट ऑप्शन है आंसर्स में से वो ऑप्शन ए है, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। सपोज एक ट्री है, उस पर कुछ 50 ग्रास हॉपर्स है, उनको कुछ 10 माइस ईट करे, उन 10 माइस को कुछ 2 और 3 बर्ड ईट करिए, तो दैट्स वाई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी में ट्री और ग्रास हॉपर तो चलो हम मान ले सही, बट माइस और बर्ड इतने ज़्यादा नहीं हो सकते, दैट्स वाई इट इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में ट्री की तादाद बहुत ज़्यादा दिखाई है, ऑप्शन सी और बी इसलिए इनकरेक्ट हो गए। तो जो बेस्ट करेक्ट ऑप्शन हमें गिवन था वो ऑप्शन ए था, दैट्स वाई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस विच मेक्स यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर इज, एज यू नो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, तो दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं होगी, रिलीज होगी, दैट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एसिमिलेशन इन एनिमल्स, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सिर्फ एक ही प्रोसेस में यूज हो रही थी, वो ऑप्शन बी था, बाकी सारे में क्या होगी, रिलीज, दैट्स वाई बी, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इज द करेक्ट आंसर।